अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि खैरियत के साथ होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मेरा एक छोटा सा कुछ मिनट्स का एक लाइव सेशन और जिसमें मैं अपना प्रोस्थेटिक्स ऑर्थोटिक्स के बारे में बात करूँगा कि व्हाट इज़ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, हाउ we work, how we fabricate, and what are the team members and how we do our services to the patients. सबसे पहले ये कि प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स एक ऐसा फील्ड है मेडिकल के रिलेटेड रिहेबिलिटेशन में जिसमें हम मसनूई अज़ा बनाते हैं और कुछ ऐसे मसनूई आर्टिफिशियल सहारे बनाते हैं जो पेशेंट होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। अब जो प्रोस्थेटिक्स है वो तो इजीली समझ आ जाता है कि कोई भी पेशेंट जो हो जिसका कोई भी ऐसा कट जाए, चाहे उसका हाथ काट दे यहाँ से या उसका पाँव कट जाए, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है फिर वो चल नहीं पाएगा, उसका फंक्शन लॉस होगा उसमें, तो उसको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो वो सहारा जो है उसको जो बनाने का तरीक़ाकार, उसके जो नॉलेज है, उसके पीछे जो उसकी ट्रेनिंग है, वो तमाम सर्विसेज जो हम देते हैं उसको हम प्रोस्थेटिक्स कहते हैं। ठीक है, उसमें फिर छोटा सा प्रोस्थेसिस भी होता है, फिंगर प्रोस्थेसिस से लेके पूरी टांग कट जाती है, लेग का पूरा वो उसमें बनता है। तो इसके बरक्स जो ऑर्थोटिक्स है, ऑर्थोटिक साइंसेज, वो उस फील्ड को हम कहते हैं कि जिसमें अज़ा तो मौजूद होता है लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता ठीक से, उसमें कुछ फंक्शन के हवाले से उसमें प्रॉब्लम होता है, वो टेढ़ा होता है, वो टेढ़ा हो सकता है, उसकी लाइनमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके अलावा जो है उसमें कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई एक्वायर्ड प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस तमाम सहारों को जो हम यूज़ करते हैं उसको करेक्शन के लिए, उसकी सपोर्ट के लिए, उसकी प्रिवेंशन के लिए या उसको असिस्ट करने के लिए, उसको हम ऑर्थोटिक्स बोलते हैं। अब उस ऑर्थोटिक्स की मिसाल इस तरह दे सकते हैं कि अगर ये हमारा हाथ है, ये मेरी उंगली है, तो अगर ये टेढ़ी है फॉर एग्जांपल, तो इस टेढ़ेपन को सही करने के लिए हमें एक सहारे की ज़रूरत होती है जो हम यहाँ से ऐसे लगाएंगे, मसनूई सहारा जो होगा तो उसको सीधा करेगा। अब ये जो सहारे वाला चीज़ होगा, जो सपोर्ट होगा इस तरह का, तो इसको हम ऑर्थोटिक्स बोलते हैं। और जो फील्ड होती है, जो जो जो, जो चीज़ बनाते हैं प्रोडक्ट, वो ऑर्थोसिस या ऑर्थोटिक्स प्रोडक्ट कहलाते हैं। So, in simplify, I will say that the prosthetics and orthotics are the sciences dealing with the human life, with the persons with the disabilities, to enable them back to their normal life by some external devices or some supports. So, for prosthetics, the patient who has lost his limbs due to any reason, to restore that limb artificially and to gain the function and get back then the person to normal life. So that thing will be known as the prosthesis. So if I will show you. For example, I have this model here. Okay, if it's amputation from here, so this all part is missing. So what happens if this part is not there and the patient cannot walk on the amputated leg? So we need to restore all these functions, possible functions, whatever we can, and the physical appearance. So what we will make something prosthetic leg to restore the function and make the patient a productive member of the society and to make his life more easy. So all those things, all those supports and the artificial limbs, whatever we make for an amputated leg, that will be known as prosthesis, and the field itself is called as prosthetic sciences. Okay, in other words, for the orthotics, if we have a patient who has, this is a foot model, and he is a flat-footed, okay, his bone alignment is disturbed, or he has some equinus deformity, or he has some other deformities, adductors or foot adductors, all these things,
okay, or maybe like that. So whatever we have to deal biomechanically with this kind of patient, for flat foot, we must use something insert, which we call as foot orthosis. So this piece, the one we fabricate, is known as orthotics, and the one correcting the deformity or preventing it from further progression or stopping or helping, this is called orthotics. In simple words. So these are the basic things for prosthetics. Actually, it's a new field, and most of the people they don't know about that. So that's why I would like to give awareness about this. So we have very challenging cases. We have patient as a newborn, and we have a patient who is a geriatric, maybe 90 years of age. So we deal all kind of patients from A to Z, which is need orthotics or prosthetic services. If we talk about the children, so most of the children, if you notice that they have some bow legs or they have some clubfoot deformities, flat feet, or some other neuromuscular problems, or even for the cranial problems, if the head is flat or deformed in different from different angles. To correct that head deformities, we have a special customized cranial remolding orthosis. So this cranial remolding orthosis is an orthosis. It's not a prosthetic. So this device, it will reshape the cranial deformities in our desired direction or in desired position. And the patient with this is full safe. It's a fully conservative, evidence-based, FDA-approved technology. So similarly, we may have some patients who need some kind of support, who have some problem with the ankle or with the feet. So what we have to do for that one, we need to see if the patient really need this type of braces, who has some dorsiflexion movement there and plantarflexion stop, and they have full contact with the joint, all these things. Okay, so this is just example of orthotics, what orthotics is and what we are providing. This is one example. The second one, we have another one, which is a rigid one. This is we call this ankle foot orthosis. Okay, rigid without joint. So that can also be used for patients with different lower limb problems, for abnormal postures, for the foot muscles imbalance, and some other deformities, or many other things that we can use as per the. And there is different designs for that. So these are all orthotics and orthosis. So this is known as AFO, ankle foot orthosis, because it's covering ankle and foot. We have another one. If you can see here, we have something we added here. So in this kind of patient, we have some shortening. So we accommodated that. So from shortening until the amputation or the spinal problem, we have different types of braces and orthoses and prosthesis. So this one, it is another one, solid ankle AFO with compensation outside of the AFO. So these are different things which is used for different purposes and for different deformities and diagnosis. तो ये जो थोड़ा सा मेरा लाइव आने का मकसद ये था कि थोड़ा सा प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक्स के बारे में लोगों को समझा दें। इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बता दी हैं। इसका फुल प्रोटोकॉल होता है। ये एक रिहेबिलिटेशन टीम का एक हिस्सा है प्रोस्थेटिस्ट, एंड उसमें फिर हमारे पास पूरा एक टीम वर्क होता है, जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से लेके न्यूरो सर्जन से लेके न्यूरोलॉजिस्ट से लेके फिजियोथेरापिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और बहुत सारे जो भी हमारे साथ एक टीम बनती है। तो ये सब मिलके इसको रिहेबिलिटेशन का काम करता है। सो आज के लिए इतना ही। तो आपका बहुत शुक्रिया, और
अगर कुछ बातें पसंद आई आपको तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। बाय बाय।